दीपा बहन स्वागत है, अंजू बहन स्वागत है, रिंकी बहन स्वागत है। आज सुबह से हमारे घर पे लाइट नहीं थी, बिल्डिंग में पूरा नीचे से लाइट बन रहा था बहन, थोड़ा जल्दी चालू कर लिया करो। ये कब से इंतजार कर, हाँ पता था कि इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, आज बोल तो रही हूँ 10 बजे से मीटर पूरा बिल्डिंग का मीटर खुला है, बन रहा है, नया वायरिंग हो रही है ना, तो सारा मीटर का काट दिए हैं वायर ही। सुबह से लाइट नहीं थी दूसरे के घर पे, तो मोबाइल चार्ज किए तो थोड़ा हुआ, धरोहर बहन का लाइट सपोर्ट करते करते स्विच ऑफ हो गया मोबाइल ही। हाँ ऑन करके रख दो, ठीक है लगा के सो जाओ, और क्या करोगी। अलार्म लगा दो, 1 घंटे बाद उठ के अपना बंद कर देना, क्या करोगी। मैं तो सोची आज चालू ही नहीं करूँगी, अभी भी बस आ ही रही है मोबाइल, बस चार्जिंग में सब लगा ही रही हूँ। मैं तो एक जन के पास इन्वर्टर था, अपना गई चार्ज की, लेकिन नेट ही नहीं था, वाईफाई से चलता है, वाईफाई चार्ज ही नहीं था। हैरान हो बोलते हो, दोपहर से कुछ नहीं कर पाए। मोबाइल ऑन करके रख दो और जाओ सो जाओ, जब 1 घंटे का अलार्म लगा दो, उठ के बंद कर देना, क्या करोगी। खुद ही हैरान हूँ, 10 बजे चालू कर देती हूँ मैं लाइट, मुझे पता है सबको सोने का रहता है कि रात भर लाइट नहीं देख के सब बैठे रहेंगे। अभी अभी बन ही रहा है, अभी भी किसी किसी के घर का लाइट आया भी नहीं है, और जैसे लगाई चार्जिंग में बस तुरंत पहले मुर्गी, क्योंकि खुशी मिश्रा के लाइन में नहीं जा पाई, क्योंकि चार्जिंग नहीं था, मोबाइल है। एक मोबाइल किसी तरह का, जैसे बिल्डिंग में इन्वर्टर 4-5 जन के पास है, अब पूरे फ्लैट 50 है, और कौन जाए किसके किसके। तो जो का चार्ज हो रहा था अपना, किसी तरह चार्ज हो रहा था, उसके बाद अपना वो ठीक है, अब लोग ऑन कर दें। महाकुंभ में ये फोन केवल चार्ज कर करके सब पैसा कमाए। हाँ ऑन करके रख दो, ऑन करके रख दो, 1 घंटे बाद उठना तो बंद कर देना, क्या करोगी। ऐसे नहीं, मैं खुद ही सोची लग रहा है आज मेरा कहीं लाइट चालू होगा, क्या है लगाई दीदी। अब भाई सोने जा रहे हैं, ठीक है दीपा बहन, जाओ सो जाओ, ऑन करके सो जाओ, 1 घंटे बाद बंद कर देना बहन, ज़्यादा मत करना, 4 ही घंटा करना। अभी तो सर्विस के लाइव में नहीं जा रही हूँ, कर दूंगी आपका, लेकिन ठीक रहेगा। चार्जर कर रहे थे, सर्विस अभी मेरे लाइव में नहीं आ रही है, मैं भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि रात उनका भी चालू होता है, रात में मेरा भी चालू होता है, क्योंकि 1 घंटा भी मेरा उनके पास है भी, चाहे सपोर्ट करने करे तो मेरा 1 घंटा उनके पास है। तो दिन गई थी मैं, लेकिन वो नहीं आई, मेरा रात में चलता है, उनका भी रात में चलता है, तो कैसे आए। ये तो 4 घंटा कर दूँगी, नहीं तो ज़्यादा मत करना, ज़्यादा मत करना, मैं हैरान हो जाऊँगी बहन, ज़्यादा मत करना, क्योंकि यही लाइट का प्रॉब्लम अभी कल भी रहेगा कुछ, क्योंकि कल भी अगर ये पूरा सही से नहीं बना होगा तो कल भी आज देखो पानी नहीं छोड़े, आज पानी भी नहीं है मेरे घर में, क्योंकि पानी लाइट से ही पानी चढ़ाया जाता है ऊपर, और सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, पानी भी नहीं ला सकते बाल्टी से। सही में इसमें कितनी क्या दिया है, 163 घंटा। हाँ 1 घंटा 63 मिनट 41 सेकेंड, इसमें दिया 163 मिनट 41 सेकेंड, 41 मिनट 51 सेकेंड।
अलार्म लगा देना दीपा बहन, जितने बजे लगाई हो 1 घंटे बाद लगा देना, बंद कर देना, ज़्यादा मत देना बहन। स्वागत है पांडे बहन, आज लाइव डेट कर दी बहन। आज बिल्डिंग का काम चल रहा था लाइट का ना, मीटर जितना भी बिल्डिंग का 50 फ्लैट है ना हमारे बिल्डिंग में, 50 घर है, 50 रूम का मीटर काट के दूसरा नया मीटर फिट हो रहा था ना। आज सुबह से लाइट नहीं थी, 10 बजे का लाइट गई हो तो सुबह चार्ज किए थे, आप लोग का सपोर्ट कर दिए। धरोहर का लास्ट टाइम सपोर्ट करते करते मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। हाँ बहन, आज खाना पीना हो गया है, बर्तन वर्तन नहीं धोए थे, पूरा अंधेरा अंधेरा था, मोबाइल जला जला के किस तरह काम किए। अब लाइट आई अभी 11 बजे, चाट भी लगा तुरंत लाइट चालू कर दी। मैं सोची आज नहीं आएगा तो नहीं चालू कर पाऊँगी, अच्छा हुआ कि आ गया। अच्छा हाँ, आपका लेट सब आते हैं ना। मैं तो खाना पीना तो खवाई हो गया, लेकिन बर्तन नहीं धोली। बर्तन वैसे सारा किचन में बेसिन में भरा है बर्तन। लड़की बोली धो दो, ये पानी भी नहीं है, पानी भी थोड़े छोड़े हैं, पता नहीं कल छोड़ेंगे कि नहीं, तो नल चालू करके बर्तन धोती है। तो मैं रहेगा थोड़ा थाली में लेके पानी धो लूँगी। शहर में यही सब कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है ना।
देवेंद्र बहन स्वागत है मेरी लाइव में, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। कैसी हो? तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ बहन, आप कैसी हो? आप कैसी हो? आपका चैनल बहन डीमोनेटाइज नहीं हुआ है, आपका चैनल सही है, आपका सिर्फ सेटिंग ऑफ हुआ है। आप परेशान मत होइए, आप रेड उसका सेटिंग ऑन करवाइए और रेड वाली लाइव चलाइए। आपके चैनल में कोई दिक्कत नहीं, मैंने देखा उस दिन आपका चैनल। वो क्या हुआ ना, वो गूगल पिन का अप्लाई कर रही थी, वही सेटिंग ऑफ हो गया है बस। और आपका कोई दिक्कत चैनल में नहीं है। आप किसी को उल्टा सीधा दिखाओगी तो आपका चैनल को नुकसान करेगा। मैं देखी उस दिन आपका चैनल डीमोनेटाइज नहीं है, मोनेटाइज है, अभी भी मोनेटाइज है। वही डॉलर का निशान ऑफ हो गया है और आप पॉइंट बन रहा है। आप लाइव चला रही हो तो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, नहीं पॉइंट दिखाई दे, वो डॉलर ऑफ हो गया है ना आपका, इसी वजह से आपका डीमोनेटाइज नहीं हुआ है। उस दिन मैंने आपका चैनल देखा। यहाँ पर डॉलर देखते हो, वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, डॉलर आपका ऑफ ऑन करना चाहिए ना, तो वो ऑफ हो गया है ना, तो कैसे दिखाई देगा? वो जब गूगल पिन का अप्लाई कर रही थी, कौन कर रहा था? आपकी लड़की कर रही थी कि लड़का? कौन कर रहा था? उनसे यही बोलो कि जो सेटिंग है वही ऑफ हो गया है, इसी वजह से डॉलर का निशान बंद हो गया है। वही ऑन कर देंगे, डॉलर का निशान आ जाएगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने कैसे देख रही थी? मैं देखी हूँ आपका चैनल, उस दिन मैं पूरा चैनल पे आपके गई थी, पूरा वीडियो देखी आपका। वो तो मैं पूछी मेरी बेटी भी, मेरा जब कर रही थी ना गूगल पिन अप्लाई, तो मेरा भी ऐसे हो गया था, तो बाद में सही कर दी। तो वही मैं बताने लगी तो बोली कुछ नहीं मम्मी, उसमें कोई परेशानी नहीं, वही ऑफ हो गया है बस। हाँ, तो वही लड़की को बोलो कि जो जो सेटिंग आता है वही सेटिंग ऑन कर दो बस, और कुछ करने का नहीं है। ऑफ हो जाएगा तो अपने आप डॉलर का निशान चला जाएगा, उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वही करवा दो, रेड वाली लाइट चलाइए, आपका डॉलर बने। वहाँ से कुछ नहीं हुआ है, आपके यहाँ मोबाइल से ही हुआ है, यूट्यूब वाले कुछ नहीं किए हैं आपके। क्या करूँ, वो आपका नंबर ही नहीं, मैं बता देती कैसे कैसे करना है। हाँ, तो वही क्या होता है ना, गूगल पिन ऑन कर जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ एक सेटिंग आता है, तो वही सेटिंग बोल देना कि जब गूगल पिन अप्लाई की थी तो एक सेटिंग अंदर होता है, वही सेटिंग ऑन ऑफ होता है, वही ऑफ कर दोगी तो यूट्यूब पर वीडियो देख रही थी वैसे ही कर रही थी। गूगल पे के लिए अप्लाई तभी एड बंद हो गया आना। ठीक है, भेजो, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। लिख के दो, आप लिख के दो, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। हाँ, तो वही एक्सचेंज फॉर्म पूरा नहीं की ना, इसी से ऐसा हुआ है। आपका वहाँ से कुछ परेशानी नहीं है। वो आप 2 नंबर तो मैं
कल मुझे कब मैं कॉल करती हूँ आपको तो बता देती हूँ, परेशान मत होइए। अगर हो जाएगा तो सही हो जाएगा तो अच्छी बात है। वैसे है भरोसा सही हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी है ही नहीं, तो सही क्यों नहीं होगा। हाँ, उसका फॉर्म पूरा सही से नहीं भर पाई ना, इसी वजह से है। सेटिंग ऑफ हो गया, फॉर्म भी पूरा नहीं भर पाई। अरे वो यूट्यूब पे कभी सही कभी गलत बताते हैं, सही थोड़ी रहता है सब। जब वो बंद हो गया, ऑफ हो गया, वो डॉलर तो ये कैसे आएगा। ठीक है, ठीक है, आप लिखो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगी। पर वहाँ से रिंकी दी तो ली मैं स्क्रीनशॉट, 500 रिंकी से। अच्छा, हाँ हाँ ले हाँ, ले ली। अब आप जल्दी जल्दी कमेंट करके ऊपर कर दो। हाँ ले लिया, हाँ ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब उसको मैं ले। हाँ ठीक है, आपकी लड़की की कितने टाइम छुट्टी रहता है? करेगी आपकी लड़की ही बताएंगी यहाँ से फिर, वही उसी को बताएंगे एक एक चीज़ कैसे करना है तो करेगी। टेंशन मत लो, कल आपका सही हो जाएगा। और फॉर्म भी पूरा भरवा देगी। कुछ गलत नहीं रहता, वही एक जानकारी नहीं रहती तो इंसान इधर उधर थोड़ा टच कर देता है तो हो जाते हैं, और ऐसा कुछ होता नहीं है। वो उधर से कुछ नहीं, वो आपका उधर सेटिंग ऑफ हो गया, पूरा फार्म भर नहीं पाई, तो वहाँ से वही ईमेल आया है कि उसका प्रोसेस पूरा करो गूगल पिन के लिए। हाँ, तो बिंदी बहन खाना पीना हो गया।
स्वागत है अर्चना, बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हारी लाइट की वजह से बहुत परेशानी हो गई बिल्डिंग में, सोसाइटी के पूरे मीटर खुल गया, सबका नया वायरिंग डाला जा रहा था, तो आज 10 बजे से अभी तक लाइट ही नहीं आई। अब सुबह जिसका जिसका सपोर्ट था, चार्ज था मोबाइल, कर दिए। और तो मशीन में कपड़ा डाल के वैसे ही रखा पड़ा है, मशीन में कपड़ा धोई नहीं। अभी तो आई 11 बजे तो लाइट आया, तब चार्जिंग में लगा के तो लाइट चालू की। मैं सोची यार लग रहा है लाइट नहीं चालू कर पाओगे। दोनों आईडी से आने के लिए अर्चना धन्यवाद। और अर्चना खाना पीना हो गया, अभी तो डाला होगा, अर्चना आवाज़ नहीं सुन रही हूँ। आसो देखिए मैं बड़ा कचर देता हूँ, देखिए मैं बड़ा मिल देती कचर तो नहीं हाँ बहन अभी चालू की है, तो उसके से 20 मिनट चालू भी हुआ, आधा घंटा। सोची नहीं आएगा लाइट, लग रहा है नहीं चालू करेंगे, तब से फिर लाइट एक एक रूम पर देने लगे। अभी आया, सुबह से लाइट की वजह से सारा दिन डिस्टर्ब हो गया। पीने का पानी, नहाने का पानी, सब चीज़ से डिस्टर्ब हो गया। पीने का पानी फिल्टर चलता है वो बंद हो गया। हाँ होता है, कंटाल आता है, क्या करे, गुस्सा लगता है कभी कभी कि छोड़ दे। अच्छा तीनों आईडी लगाई हो, होता तो है ही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस पर इतना मेहनत करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, एक लालच है इसकी, अब लगे हैं तो लगे रहें। नाम भी हुआ कि यूट्यूब में आई, कुछ हो भी नहीं रहा है, न व्यूज जा रहा है न कुछ जा रहा है। पहले तो थोड़ा 400-600 व्यूज जाता भी था, अब तो कहीं 20 व्यूज, कहीं 15 व्यूज, कहीं 50 व्यूज। तो क्या भी कितना भी अच्छा गाना बना लो, जाता ही नहीं, मेरा तो व्यूज ही नहीं जा रहा है, क्या हो गया। दो आईडी लगाई दीदी, अच्छा आईडिया तो तीनों लगी थी, अच्छा दो ही तो, अच्छा लाइक ठीक है, मुझे लगा तीनों लगाई। और खाना ना हो गया अच्छा ना। सही बोल रहे हैं हसबैंड जी, यही बुढ़ापे में देखा करेंगे, हम लोग जवान थे तो ऐसे थे, और कुछ फायदा तो कुछ फायदा हो तो सही बता यही चीज़ हमें भी लगता है कि बुढ़ापे में देखेंगे कि हम लोग जवान थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, और फायदा तो कुछ नहीं दिख रहा है। साल 1.5 साल लाख खोने से 2-4 हज़ार आ ही जाएगा, तो क्या मतलब है। सही है कि इतना टाइम पास कर रहे हैं, और क्या करें कहते हैं इस चीज़ से हमारा घर नहीं चल रहा है, हमारे
हमारी याददाश्त पूरी रहेगी यूट्यूब पर। सही बात है, सही बात है। घर नहीं चल रहा लेकिन यादगार तो रहेगा ना कि हमने यूट्यूब पे काम किया, ऐसे ऐसे वीडियो डाल रही थी। होगा दिव्यंदी बहन, चाहे 2 साल में जब चैनल जुड़ना होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। दिक्कत हाई चैनल से रहा है उनका तो ठीक है, हमारे चैनल का तो बेकार है यादगार। सही बात है, अरे जिसका चल रहा है उसका तो एक एक ऐसी क्रिएटर हैं कि कुछ भी नहीं, साला फालतू नहाने गई हैं वहाँ 1-1 लाख बोझ ढो रहे हैं, वहाँ 1-1 लाख। हम लोग का सबका साला इतना अच्छे से गाते भी है तो भी कोई 1000-500 लोग नहीं देखते। वहाँ वो लोग 1-1 घंटे के अंदर 2-2 लाख लोग देख रहे थे। क्या सब लोग उन्हीं के चक्कर में पड़े? हम लोग को कोई नहीं पूछ रहा है। लोग बोलते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार। कभी हम लोग भी चमकेंगे कि लग रहा है ऐसे यादाश्त ही बनाते रहेंगे देवेंद्र बहन। जंगी जंगी वही बात बोल रही हूँ ना कि ऐसे ऐसे क्रिएटर के पास व्यू आते हैं कि उनका देख लोगे तो गुस्सा लगता है उनके वीडियो पे कि क्या बनाई है। लेकिन इतने लोग देखते हैं कि क्या, वो देखो बेहोश हो गई, वो देखो होश आ गया, वो देखो खाना खा रहा है, वो देखो अपनी बहन के यहाँ जा रही है। इस पर इतने इतने लोग देख रहे हैं। अरे बहन भाई के यहाँ दुनिया जाते हो कौन सी नई बात है, उसको देखने के लिए लोग भीड़ है। हम लोग एक वीडियो कम से कम 1000-1200 जाए तो उसको सुकून हो, वो भी नहीं जा रहा।
देखी जाबे फोन पर है ना। नहीं सो नहीं गई देवेंद्र बहन, पैर बहुत दुख रहा था। शुरू में तो थोड़ा लगा था कि यूट्यूब पर, उसके बाद लगता है बोरिंग। सही बात है, हमारी तो व्यक्ति बना किसी चैनल जो हम वीडियो बनाने लगे तो हम बनाते रहे। हूँ देवेंद्र बहन, पैर दुख रहा था, वो लड़की कचक गई थी। किस चीज़ की आवाज़ आ रही है दीदी? पंखा चल रहा है क्या आपके यहाँ? हाँ पंखा चल रहा है, बहुत गर्म है यहाँ, बहुत मौसम गर्म है। पर देवेंद्र बहन आज लाइट, आज लाइट सुबह से नहीं थी, गर्मी से आज हालत ख़राब हो गई। वही पंखे की आवाज़ आती होगी। पंखा फुल स्पीड में चल रहा है तब जाके। उधर ठंडी पड़ रही है गांव की तरफ आपके? आप हाँ, मैं मुंबई रहती हूँ देवेंद्र बहन, मैं मुंबई में रहती हूँ। मुंबई में गर्मी 12 महीने रहती है, ठंडा यहाँ नहीं होता है हमारे यहाँ। तो ठंड है। हाँ आप कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं कि कहाँ से हैं आप? ठंड तो पड़ता ही होगा उधर। ठंडी होगी तो रजाई भी गाँव, हमारे इधर भी गांव में ठंडी बताते हैं, फोन पे करती हूँ तो सब बताते हैं ठंडी पड़ी। यहाँ नहीं पड़ती, यहाँ तो दिन भर पंखा भी गए तो 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मैं बहुत गर्मा गर्म मौसम, जब वहाँ बहुत ठंडी पड़ेगी तो भी यहाँ नहीं गर्म ठंडा पड़ेगा। पंखा चालू करो तो चादर ओढ़ लो, नहीं चालू करोगे तो भी कुछ मत ओढ़ो। ठीक है देवेंद्र बहन, जाओ सो जाओ, कल आएंगे। कल कितने बजे आपकी लाइव चलेगी? आऊँगी मैं आपकी लाइव में।
ठीक है देवेंद्र बहन, सुबह मैं आपके लाइव में आऊँगी। हाँ, कहीं चले जाओ, ट्रैवलिंग कर लो तो सर में दर्द तो होने ही लगता है। मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है, कहीं चली जाती। हाय।
हम्म।